Hello, dear students. Assalamu alaikum. Hope you will be fine with the grace of Almighty Allah. Stay at home and stay safe. And साथ साथ ऑनलाइन एंड लेक्चर्स का आनंद भी ले लीजिए. As far as our unit is concerned, we have completed that. That is evolution and genetics. And today we are going to come across through a new concept here, and that concept is belongs to your next unit, unit 5, that is our environment. Basically, what is an environment? Environment is the physical and biological world. It's the world which contains physical components and biological components, or we can say it is the world where we live along with biological and physical components, and that is an environment. Physical and biological world where we live in is called an environment, or it is a space or an area having physical components and biological components in which different organisms interact with one another, as well as the physical components for stability, for balance, and for healthy environment. And that is environment here. Okay? The physical and biological world where we live in is called an environment, or it is a space or an area having physical components and biological components, where each and every component is interdependent with one another. यानी कि especially biological components depends upon the physical components for survival, for maintenance, for balance, for healthy environment, for perpetuation of an environment, for propagation of an environment, for propagation of biological components, for propagation of the individual systems in the environment, that also constitutes the environment. ठीक है. अब यहाँ पे और environment जो है that contains physical component as well as biological components. Physical components or physical world of environment, physical world of environment comprises land or soil. Physical world of our environment comprises water. It comprises air, and that forms atmospheric component of our environment. Atmosphere. And these are main physical components of our environment. That is here water, atmosphere, water bodies, soil, land, and air as well. Okay? And on the other hand, there is a biological component of atmosphere, component of our environment, and this biological component here is in the form of plants, animals, humans are also animals, human beings, microorganisms like bacteria, microorganisms, fungi, algae, other protists, etc. ठीक है. तो यहाँ पे plants as a living systems, animals as living systems, human beings, microorganisms, fungi, algae, etc. Every system that bears life, or we can say the system which is a surviving system, which has life, is constitutes the biological component of our environment. ठीक है. Biological component of our environment. ठीक है. Human beings are the only
organisms in this biological component who change the environment to fulfill you know, their needs in the form of food, clothing, housing, transport, and industry. Human beings are biological components. These constitute the biological components of our, you know, human beings constitute the biological components of our environment, and they also interact with another components in order to fulfill their needs, like food, shelter, clothing, food, shelter, clothing, housing, transport, industries, transport, हाउसिंग एक्स्ट्रा है वो शेल्टर में आता है. तो ये चेंज करता है बैलेंस फॉर इट्स नीड्स, फॉर इट्स नीड्स. तो क्या है कि यूजुअली फिजिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पर जो है इंटरेक्ट इस तरह करते हैं इस एनवायरनमेंट में in order to create the sustainability, in order to create a balance in the ecosystem, or in order to create a healthy environment, perpetuating environment, non-disturbing environment, undisturbing environment. तो वहाँ पे एक दूसरे सिवाय ह्यूमन बींग्स ये अपने नीड्स के लिए यानी कि फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एट्सट्रा, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री एट्सट्रा के लिए जो है दूसरे कंपोनेंट्स किसी एनवायरनमेंट के कोई अदर कंपोनेंट को यूटिलाइज करते हैं. तो उससे क्या होता है, उससे एनवायरमेंटल हेल्थ जो है बिगड़ जाता है, यानी कि डिस्टर्ब्स द एनवायरमेंटल हेल्थ एंड मेक्स द एनवायरनमेंट अनहेल्दी. सो यहाँ पे एक बात है कि कैसे एक एनवायरनमेंट जो है अनबैलेंस, अनहेल्दी हो जाता है. तो due to different activities performed by the human beings, ठीक है, every individual, अगर हम हर किसी इंडिविजुअल की बात करें कि every individual यानी कि releases what we call it different substances which are not utilized, which are not utilized by, which can't be utilized by that individual system, and these are released into the environment, and that substances which are released into the environment after the physical or physiological activities performed by the individual system, उन सब चीज़ों को हम waste materials बोलते हैं, waste materials. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है और एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट के साथ इस चैप्टर में डील करेंगे, एनवायरमेंटल फिनोमिनास देखेंगे, एनवायरनमेंट में डिफरेंट इंटरेक्शंस देखेंगे, डिफरेंट बायोलॉजिकल इंडिविजुअल्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस है फॉर सस्टेनेबिलिटी, फॉर बैलेंस, फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी एनवायरनमेंट. तो एक तो वो पढ़ेंगे, तो दूसरी तरफ से हम ये चीज़ भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि what are those parameters which lead us the pollutedness of the environment, which lead us the unhealthiness of environment, and main ये जो responsible individual system, main responsible system for biological system for that is human activities. Human beings are responsible. They perform certain physiological activities, and due to which they release the products, and these are not these are not useful for the man and all that other individuals. These are usually these are usually poisonous and or harmful for the other individual systems in the environment, and these are known as waste materials. Waste material क्या है? Those substances which are released by individual systems, which are released by living systems as harmful, which are released by living systems as byproduct of their activities, either physical or physiological activities of their activities they perform activities. तो
वो सब्सटेंसेस वेस्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। हर कोई इंडिविजुअल, ह्यूमन ही नहीं, हर कोई इंडिविजुअल कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है आफ्टर दे परफॉर्म देयर फिजिकल एक्ट, आफ्टर दे परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल एक्ट, दैट इज फिजियोलॉजिकल एक्ट, दे रिलीज सर्टेन कंपोनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। दे रिलीज certain components into the environment and these components are very toxic, these are poisonous, ठीक है। तो these are harmful for the other living individuals in the environment and these are collectively known as waste materials, ठीक है। those substances which are released by the living systems as byproduct of their activities in the environment, environment, ठीक है, उनको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल्स। तो वेस्ट मटेरियल्स दो तरह के होते हैं यूजुअली। देयर आर टू नेचर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। वन, वेस्ट मटेरियल्स and that are biodegradable, degradable wastes. Second जो आपका है that is non-biodegradable substances और wastes, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल क्या है हमने किया है ये। अब वेस्ट मटेरियल्स के दो नेचर हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दूसरा है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सिस्टम्स but are these are also poisonous but are converted into harmless substances in due course of time by the certain organisms and these organisms are known as decomposers, yani ki those waste materials which are living by released by the living systems, man as well, ठीक है, तो into the environment, but after due course of time these harmful substances are converted into harmless substances in a due course of time by different microorganisms like bacteria and certain fungi. They degrade, they act over that particular substance and degrade it and make it harmless or make it non-poisonous, and these substances are known as biodegradable substances. तो क्या है biodegradable substance, ठीक है। तो biodegradable substances यहाँ पे definition लिखाएंगे हम पहले। These are those substances, these are those wastes or waste materials which are released by living organisms and can be converted into harmless or non-poisonous forms, non-poisonous substances in due course of time, by certain organisms like bacteria and fungi. These are collectively known as decomposers, ठीक है। तो कुछ ऐसे substances जिनको easily break किया जाता है by the activity of decomposers. Decomposers basically release the certain enzymes over it and they cause the hydrolysis of that substances, and due to a virtue of the hydrolysis the substances can be converted into, वो convert होता है non-poisonous और harmless substances में by the action of microorganisms like certain bacteria and fungi, ठीक है। These are collectively known as decomposers. तो ये जो biodegradable substances होते हैं तो इनकी एग्जाम्पल सपोज क्या क्या है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल यानी कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल है आपका कैटल डंग होता है, कंपोस्ट होता है, लीव्स,
प्लांट लीव्स हैं, ये होता है हे, वूल, ठीक है, लिटर एटस्ट्रा, लिटर 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 एनिमल बोन्स, एनिमल बोन्स है आपका, और जो है वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल पील्स, ये है आपका, ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू दिस। वुड है, कॉटन है, बहुत सारे ऐसे है, वुड, कॉटन एक्स्ट्रा। तो क्या है बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस? Those substances which are released by certain individuals by their physical or biological acts into the environment, and these substances are harmful, but they can be converted into harmless or non-poisonous substances by the activity of decomposers like bacteria and fungi, and these are known as biodegradable substances. इसमें आपका क्या आता है, आपका कैटल डंग आता है, ये मवेशियों का जो है वो मल होता है, उसको कैटल डंग बोलते हैं, ये दैट इज़ इजीली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं और इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेज। आपका कंपोस्ट है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये कंपोस्ट होता क्या है बेसिकली? कंपोस्ट होता है एक किस्म का जो है मैन्योर, ठीक है, कंपोस्ट होता है the manure made from decayed vegetable stuff or plant substances। यानी कि कंपोस्ट क्या है? इट इज़ a manure, एक तरह की मैन्योर होती है, खाद होती है। It is manure which is made from decomposed plant stuff। ये प्लांट स्टफ होता है, कोई भी वेजिटेबल और प्लांट स्टफ होगा, अगर उसको डंप करेंगे अंडर द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ वहाँ पे कोई गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पे डंप करते हैं प्लांट सोर्सेज, जो भी ब्रेकेड फ्रैगमेंट है प्लांट का, जो भी इन द फॉर्म ऑफ अ लीव है, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट है, वेजिटेबल है, रोटन वेजिटेबल है, उसको डंप किया जाता है अंडर द सॉइल सबस्ट्रेटम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ डिच, और उसको फिर बंद किया जाता है ऊपर से। तो वहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली तो उस पर एक्ट करते हैं सॉइल माइक्रोब्स, तो वो कन्वर्ट करते हैं उसको थोड़ा बहुत किस में, एक तरह का जो मैटर मैस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस मैस को कंपोस्ट बोलते हैं। इट इज़ अ मैन्योर, ये खाद बन जाती है इसको, विच इज़ मेड फ्रॉम डिकम्पोज्ड प्लांट स्टफ, तो दैट इज़ ऑल्सो ए बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, ठीक है। तो प्लांट लीव्स जो है आपके इजीली डिग्रेडेबल बाय माइक्रोबियल एजेंट्स, हे है आपका, ये इजीली डिग्रेडेबल। वूल है, वूल लिटर है, जो प्लांट सबस्टेंसेस होते हैं जो पेड़ों से नीचे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, लीफ लिटर होता है, यानी कि स्मॉल ब्रांच लिटर होता है, और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो प्लांट्स का, तो इन द फॉर्म यूजुअली ड्राइड लीव्स होते हैं वो लिटर, वो भी मतलब डिग्रेडेबल सबस्टेंसेस है, वेस्ट मटेरियल्स है। एनिमल बोनस, अगर मतलब किसी जगह जो इंडिविजुअल जो है वो मर गया है, वहाँ पे उन्होंने हड्डियाँ छोड़ी है, वो हड्डियाँ भी है, वो उन पर एक्ट करते हैं कौन, माइक्रोबियल इन्वेजन होता है उस पर, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होते हैं किसी एक डिग्रेडेट होते हैं नॉन हार्मफुल और harmless substances or non-poisonous substances। These also constitute, these animal bonus constitute the biodegradable waste, ठीक है। तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल पील्स है, फ्रूट पील है, आपका जो है कोई भी ऐसा है, या रोटन वेजिटेबल्स है, ऐसा है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। वुड है आपका, जहाँ से पेपर वुड है, पेपर है, कॉटन है, एक्स्ट्रा, दीज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ठीक है। तो इनसे एनवायरनमेंट में कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं होती है। यूजुअली अगर कम कंसंट्रेशन में बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है तब ये एनवायरनमेंट को किसी हद तक जो है अनबैलेंस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव non-biodegradable waste materials। Non-biodegradable waste materials are those waste materials, non-biodegradable waste materials, ये वो waste materials है, that these are the waste materials which are poisonous, which are harmful substances released by the physical or physiological act of
different individuals into the environment where it causes the pollution, and these can't be degraded, these can't be hydrolyzed by the microorganisms. इस पे microorganisms एक्ट करते हैं लेकिन वो इनको डिग्रेडेट नहीं कर सकते हैं, with the result जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एनवायरमेंट में, वो डिग्रेडेड नहीं होते हैं तो इंक्रीज कंसंट्रेशन कॉज द पोल्यूशन। दीज आर मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट को एनवायरमेंट को अनहेल्दी बनाते हैं। एनवायरमेंट और एनवायरमेंट में जो भी इंटरेक्शन है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के दरमियान उसको इम्बैलेंस करते हैं, एनवायरमेंट को इम्बैलेंस करते हैं, इको होल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, और दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जस्ट लाइक यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इज एनी वेस्ट मटेरियल। चलो चलो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। इट इज a waste material, it is a waste material released by organisms either through physical or physiological actors organisms into the environment and or harmful and cannot be converted into or degraded into harmless और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसको ऑर्गेनिज्म नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, with the result their concentration increase in their concentration or decrease in their concentration causes the pollution, disturb the environment, and that is why these are very harmful components which are being released by the living things into the environment and cause ecological disturbance as cause environment imbalancement। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स DDT डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नाइलन होता है, प्लास्टिक होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, आपके आयरन नेल्स है, आयरन नेल्स, ठीक है, एल्युमिनियम रेजिड्यू होता है, किसी जगह एल्युमिनियम कैन्स होते हैं, एल्युमिनियम कैन्स एटसेट्रा। यहाँ और अब बाकी जो भी कोई मटेरियल है, बॉल पॉइंट पेन रिफल तक जो है, सिंथेटिक फाइबर जो है, एल्युमिनियम है, मेटल आर्टिकल्स है, वो सभी जो है नहीं कन्वर्ट होते हैं harmless substances में। These are not being converted by the microorganisms into their harmless substances under the environmental conditions। तो फिर क्या है, इनका जो increase concentration होता है वो फिर बनाता है environment imbalance करता है।